Am I audible to all of you? My voice is coming, guys. You can say yes or no. So very welcome all of you in today's session. Today's session is on what is the right strategy. All the aspirants who are targeting 2022, जो लोग भी 2022 target कर रहे हैं, this is a very crucial time for each one of you. We had many sessions previously also. There'll be some change in today's session. Today, me and one of our team members, that is from IAS Edge, Manas, will be here, and we'll be discussing the macro strategy of the preparation. Now, we all know that civil services is a long journey, and the best part is that you have to invest the time in a proper manner with right planning and strategy. So strategy क्या होना चाहिए, क्या plan होना चाहिए, how do you navigate your preparation for the next 12 months, 14 months, 15 months. And also I'm more concerned about the macro strategy of the preparation. Means आपका macro strategy क्या होना चाहिए, subject wise, which books you should be referring, how to start NCRTs. So we'll be covering a lot of areas, and I'll be handing over to Manas in some areas जहाँ Manas discuss करेंगे preparation के बारे में. And then the session for the starting 40 minutes will be taking the entire session, and post that we'll have question answer. So let's start with this, and I hope students will also come in the meanwhile in this process. Now, what is the right strategy and plan to prepare for civil service examination? Now, that is a basic. Now, naturally, सबसे जो मुश्किल part होता है एक aspirant के लिए कि वो preparation start करे तो कहाँ से करे? What should be my first day? What should be my first month? Next 2 months? Next 3 months? कैसे मेरा preparation grow करना चाहिए? And it is very important for each one of us to understand that preparation is a long journey. There are no shortcuts here, and strategy means understanding the whole preparation, also making a plan according to the preparation. बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं that वो start करते हैं, वो किसी topper का strategy देख लेते हैं, किसी X का input देख लेते हैं. These all are good to get a basic idea, but remember everybody is different. You all have to plan your journey, और आपका journey किसी और का journey नहीं हो सकता है. आपको अपनी journey को plan करना होगा, and you have to make your own strategy, because एक कोई भी background से आता है, उसके आपके में बहुत फर्क होता है. So the next 40 minutes we'll be discussing about पहला तो CSE process क्या है, we'll understand that. We'll also try to navigate UPSC syllabus, बहुत briefly हम देखेंगे UPSC syllabus में. Then macro level पर what is the strategy, scratch से start करना है. Do's are important. अब जितना do's important है उतना don'ts भी उतना ही important है. At the same time, micro strategy क्या होना चाहिए preparation का. Micro strategy means आप weekly plan बना रहे हो तो कैसे पढ़ रहे हो, वो सारे aspect हैं. List of books NCRT से start करेंगे, फिर हम detailed book list की बात करेंगे subject wise, because बहुत सारे बच्चों ने मुझे message किया कि सर हमें subject wise आप detailed books दीजिए. फिर timetable के बारे में discuss करेंगे, and we'll always discuss the important aspect कि preparation करने के time आपको किन-किन बातों का ख्याल रखना चाहिए. So starting the first requirements of the exam क्या है, we all know UPSC में आपको you'll be serving, it is the top most examination in the country, and naturally आप select होंगे इंडिया के top career के लिए in terms of the wide variety of services हैं, personal level पे हो, familial level पे हो, professional level पे हो, motivation के point of view से हो, या फिर social aspect में हो. So UPSC एक बहुत बड़ा career opportunity होता है, but at the same time I personally believe that जो आपका intrinsic motivation होता है वो सबसे important है. What is your motivation? How is your motivation coming from? और वो intrinsic होना चाहिए, pure होना चाहिए. अगर इस journey को आपको justice करना है, there are no other way than to be very true to yourself. बहुत सारे लोग तैयारी, lot of people do preparation because they believe
or they have seen somebody, or they get motivated from somebody. But I personally believe that ये सारी चीजें बहुत momentary होंगी. What really drives you so that you can invest for the next 2 years 3 years, आपको इस प्रिपरेशन से प्यार करना होगा. आपको इस प्रिपरेशन को अपनी जर्नी, आपकी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी बन जाएगी अगले 2 साल के लिए, और वो आपकी अगले 2-3 साल में आपका फ्यूचर भी डिसाइड करेगी. सो यू हैव टू लव द प्रिपरेशन, यू हैव टू एंजॉय द प्रिपरेशन. उसमें अप्स और डाउन सारे आएंगे. मेरा पहला सवाल यही है कि वाई सिविल सर्विसेज का सवाल अपने आप से पूछिएगा, और इससे मोटिवेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. अगर इफ यू आर मोटिवेटेड, इफ यू आर एबल टू navigate the preparation through high motivation, you can maintain that journey. 3 stages है, क्विकली बात करता हूँ. फर्स्ट इज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, एंड यहाँ पेपर 1 एंड पेपर 2 दो पेपर होते हैं. पेपर 1 इज ऑफ कोर्स we'll discuss about general studies, GS1 होता है. पेपर 2 is CSAT. पेपर 2 क्वालिफाइंग होता है, 67 आउट ऑफ 200 लाना होता है, which means 33% you have to score. पेपर 1 के बेसिस पे मेरिट बनता है. मेरिट समवेयर अराउंड 50-55% के बीच में रहता है, which means eventually जो बच्चा यूपीएससी टारगेट कर रहा है वो पेपर 1 में 50% से ऊपर मार्क्स लाए. बोथ पेपर आर 200 मार्क्स. तो 200 मार्क्स में अगर आप 100 प्लस 110 के रेंज में हो, तो देयर आर चांसेस दैट यूपीएससी का प्रीलिम्स आप निकाल लोगे, कंसिडरिंग दैट आपने सीसैट में 67 प्लस मार्क्स लेके आए होंगे. तो फर्स्ट स्टेज आपने क्लियर किया. फर्स्ट स्टेज आप क्लियर करते हो, जैसा मैंने डिस्कस किया था, पेपर 1 पेपर 2, इसको क्लियर करोगे तो आपको मेंस का हॉल टिकट मिलेगा, आपको एक मेंस का जो है एडमिट कार्ड मिलेगा, और आप मेंस का एग्जाम दे पाओगे. सो बेसिकली यूपीएससी, मेरा मानना है दैट रियल प्रिपरेशन स्टार्ट व्हेन यू गो टू द मेंस, बिकॉज यहीं पर आपका जो है सिलेक्शन डिसाइड होता है. बहुत सारे लोगों को लगता है कि प्रिपरेशन इज ऑल अबाउट स्टडिंग बुक्स. नहीं, मेरा ये मानना है प्रिपरेशन बुक्स के बियॉन्ड भी है, और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट प्रिपरेशन में ये है कि आपको मेंस को समझना चाहिए. मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि मेंस रेडी अप्रोच आपका होना चाहिए. अगर आप मेंस रेडी अप्रोच हो तो प्रीलिम्स जिस दिन निकलेगा उस दिन आपका सिलेक्शन भी इंश्योर हो जाता है. नाउ 9 पेपर है, पेपर इन द मेंस, वेयर देयर आर 1 essay, 4 GS पेपर्स, 2 ऑप्शनल, और 2 लैंग्वेज के पेपर होते हैं, हिंदी या फिर इंडियन लैंग्वेज कोई भी, और इंग्लिश. तो ये 9 पेपर्स में ये 7 पेपर्स मेरिट में काउंट होते हैं, essay, 4 GS पेपर्स एंड ऑप्शनल पेपर 1 एंड 2. लैंग्वेज पेपर जो होता है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, जैसा हमने फर्स्ट स्टेज में सीसैट को देखा है. मेंस क्लियर करते हो आप तो आपकी इंटरव्यू कॉल आती है, जिसको हम पर्सनालिटी टेस्ट बोलते हैं. मेंस एंड इंटरव्यू के मार्क्स आर एडेड, एंड मेंस इज आउट ऑफ 1750 और इंटरव्यू 275 का है. इन दोनों के मार्क्स ऐड करके 2025 में आपका मेरिट बनता है. इसको हम देखते हैं अभी आगे वाले. ये प्रीलिम्स का सिलेबस है, बहुत बेसिक सिलेबस है, डिटेल्ड नहीं है, और प्रीलिम्स is a most I would say most difficult and uncertain part of the preparation, examination. उसका कारण ये है कि ओपन एंडेड होता है काफी हद तक. नेचुरली हम बेसिक अप्रोच फॉलो करेंगे तो प्रीलिम्स का निकलने का चांस बहुत ज्यादा रहेगा. इनफैक्ट आप निकाल भी सकते हो. मैंने 3 बार अटेम्प्ट दिया, मैंने तीनों बार प्रीलिम्स निकाला था जब मैं तैयारी करता था, ऑलमोस्ट अ डेकेड अगो. पेपर 2 सीसैट जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है. इसमें बेसिकली कॉम्प्रिहेंशन, ब्रॉडली 3 एरियाज होते हैं सीसैट में. वन इज ऑफ कोर्स क्यूए बोलते हैं, जिसको आप मैथमेटिक्स बोल सकते हैं, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, क्यूए प्लस डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन. उसके बाद होता है आपका रीजनिंग. रीजनिंग में लॉजिकल रीजनिंग होता है, एनालिटिकल रीजनिंग हो सकता है, मेंटल एबिलिटी, बहुत सारी चीजें हम चेक करते हैं. और थर्ड आपका होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आरसी, अपठित गद्यांश जिसको हिंदी में बोलते हैं. सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ब्रॉडली ये 3 एरियाज होते हैं जहाँ पे आपके 30 क्वेश्चंस आपके लगभग यहाँ आते हैं, एंड रीजनिंग से भी लगभग 30 क्वेश्चंस रहते हैं, एंड 20 क्वेश्चंस यहाँ से रहते हैं, व्हिच मींस टोटल 80 क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं. पेपर 1 में 100 क्वेश्चंस होते हैं, एंड पेपर 2 में 80 क्वेश्चंस होते हैं. यहाँ पे एवरी क्वेश्चन इज ऑफ 2.5 मार्क्स, और यहाँ पे हर क्वेश्चन 2 मार्क का होता है. सो हियर यू हैव टू स्कोर 50% प्लस. जो ट्रेंड है कट ऑफ का, अभी हम देखेंगे कट ऑफ को. एंड इन सीसैट यू हैव टू स्कोर 67 आउट ऑफ 200, व्हिच मींस इफेक्टिवली आपको 27 करेक्ट करने हैं आउट ऑफ 80. तो अगर 27 इफेक्टिव स्कोर, यानी नेगेटिव को बना के अगर हम 27 स्कोर कर लेते हैं इंक्लूडिंग नेगेटिव मार्किंग, तो मैं हम सीसैट निकाल सकते हैं. सीसैट एक मैं ये कहूंगा, वर्ड ऑफ कॉशन हियर, सीसैट इज नॉट ए इजी एग्जामिनेशन. सीसैट को जो क्वालिफाइंग किया तो यूपीएससी ने सीसैट के लेवल को थोड़ा ऊपर लेके चले गए. सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 30 क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं. एलआर बहुत कई एरियाज हैं इसमें, आप डिटेल में कभी हम डिस्कस करेंगे. एंड क्यूए से आपके 20 क्वेश्चंस आते हैं. सो दीज आर द 3 एरियाज
ब्रॉडली जो है आप सीसैट को इस तरह समझ सकते हो। मेंस में जीएस पेपर्स होते हैं और इसके अलावा ऑप्शनल आपका आ जाता है और एसए आ जाता है। हमारा फोकस आपको इस पेपर से अवेयर कराना बहुत जरूरी है बेसिकली कि इन सब्जेक्ट्स में हमें क्या बुक्स को रेफर करना चाहिए, बेसिक लेवल पर कैसे पढ़ना चाहिए। ऑप्शनल के बारे में आज बात हम नहीं करेंगे, ऑप्शनल का मैं एक अलग से सेशन रखूंगा कमिंग वीक, इसी वीक में सेशन है, प्लान्ड है, ऑलरेडी सेशन रेडी है। एसए के बारे में भी अलग से सेशन रखना होगा जिसमें मानस हमारे टीम में एसए लेते हैं, मानस टेक्स हिस्ट्री, एसए एंड सोशल इश्यूज एंड एथिक्स। तो ये सारे एस्पेक्ट जो है हो जाते हैं। कमिंग टू द कट ऑफ्स, ये कट ऑफ टेबल आप देख लीजिएगा। आप ये देखिए कट ऑफ जो है मैंने जनरल का ही उठाया है यहाँ पे। कट ऑफ ऑन एवरेज आपका 50 to 55% कट ऑफ होता है, ठीक है। तो कट ऑफ आपका so cut off is around 50-55%. You can see here UPSC cut off 50% के से प्लस होता है। You have to, it is a low scoring examination. UPSC का prelims का पेपर varies year to year. Some year it is tough, other year is relatively moderate. Easy भी होता है. If you see 2016 was an easy paper where people scored very high. If you ask me UPSC, what is the trend of UPSC? Well, if I analyze frankly from past 10 years, there is no single point of trend that you can understand. So UPSC shifts its goalposts every year. Some areas are very unpredictable, especially areas like geography, environment, science and tech, and art and culture. But as I mentioned, paper agar tough hoga, uncertain hoga, the cutoff will come down. Paper agar easy hoga, so cutoff will go up. Which means that एक अच्छे एस्पिरेंट के लिए कट ऑफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अच्छे एस्पिरेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट है that उनकी प्रिपरेशन थरो है, एंड ऑफ कोर्स कट ऑफ से आपको अंडरस्टैंडिंग होगा कि मेरा ये थ्रेशोल्ड मुझे क्रॉस करना है। अ गुड थिंग अबाउट यूपीएससी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यूपीएससी इज अ वेरी ओपन कंपटीशन। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि यूपीएससी ओपन कंपटीशन, मतलब कि मुझे पता है कि कितने, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर गोइंग टू आई हैव टू स्कोर टू क्रैक द एग्जामिनेशन। आप you pick the papers from last 10 years, see the paper, see the toughness level, and understand that this is what I have to score. If I am able to score this much, I'll be able to crack the examination. If I am not able to score this much in this paper, I will be out of the examination. So it is very easy to judge where you stand right now. In fact, I can speak to you in 5-10 minutes and I can tell you whether you stand a chance or not. मैं आपसे 10 मिनट में बात करके, 5 मिनट बात करके, I can gauge your preparation and I can tell you whether you stand a chance in UPSC examination or not. Naturally, students who crack the examination, they understand all this, and that is the basic objective of today's session. We need to navigate the preparation by understanding the nuances of this examination, the dynamics of the examination, and how do we move about that. Naturally, it's a wide area, so you have to work on multiple pillars. Prelims is one area, mains is one area. Here also you have to focus on solving MCQs. You have to focus on writing a lot of good mains descriptive answers. You have to practice answer writing. Reading has to be improved. You have to work on your communication, thought process development. So UPSC has multiple pillars. A real aspirant will understand that I have to work on multiple pillars, not on single pillar. So students who make these mistakes will never get selected. These are you can see the mains cutoff. These are final selection cutoff. You can see here I've made a summary of that. So these are mains cutoff. So out of 1750, which is mains, 7 papers, 7 and 250 is 750. Okay. So these are the cutoff. So again, average, if you score 2025, if you add the marks of interview, agar hum add karte hain, so this is the marks for total final merit list, and anybody scoring more than 50% will definitely get selected based on the trends of last 5 years. And if you score 55%, you are going to be an IAS officer, because to be an IAS officer among general category, you have to be within 100 rank. Okay, so within 100 hona chahiye, within 85, 90 like that. So mains is, again, mains is the most, I would say, approachable part of the examination. But mains will require time. There are no shortcuts here. You have to follow the effort. You have to cover the syllabus. You have to work on your skills. So I always say that mains is a skills driven, knowledge driven exam itna nahi hota hai, because aap prelims nikalte hain, you have attained a knowledge a certain level. But are you able to navigate the mains answers? Are you able to write them? So that is where we have to focus on.
Again, mains have high scoring areas like optional and essay is a high scoring area. So again, students should focus more here if they are able to reach a certain threshold. Now I'll come to the strategy, and I need everybody's attention here, and I'll be just discussing the basic strategy, and then Manas is going to add here some points. Now remember, if you really want to know UPSC, अगर आप मेरे से पूछते हो कि सर UPSC क्या है, how do I know? Naturally, after the pattern, everything. If you ask me that how do we decode UPSC? As a student, as a mentor, if I say what is difference between you and me, मेरे आपके बीच में क्या फर्क है? I have experience of 10 years where I have been mentoring students. How do I know how UPSC is? Because we have analyzed the papers, analyzed the trend, analyzed the pattern, and there are two ways to know that. One is syllabus of UPSC. So, पहली बात, the syllabus should, every word the syllabus should be on your mind. If I say civil services code, मैंने ये बात कही, civil services code. If I say that and I ask you, is it a part of syllabus? If I say communalism and if I say communalism, तो क्या ये syllabus का part है? And if you say, if you should be so thorough that every small point of the syllabus should be known to you. And moment you see in the newspaper, आपने newspaper खोला तो आपको syllabus दिखना चाहिए. That is a common thing. So newspaper का UPSC का जो syllabus है, it should be at the back of your hand. You should be able to memorize each and every word. I'm not saying that memorize like जैसे आप अभी तक पढ़ते आए हो, but you should be able to understand that, or should be able to filter that ये syllabus का part है या नहीं है. And that is the first rule of preparation. The second is that if you want to know how UPSC is changing over the years, what is trend, what is pattern, the second is of course the UPSC previous year question papers for prelims and mains. पिछले 10 साल के papers of prelims, past 7-8 years of papers of mains, when the new pattern came. So you have to follow that thoroughly, very thoroughly. And if you do that, you'll be able to crack the examination relatively in an easier way. Now, another question which students always ask me that, sir, is it about, how do I know? Can I solve these questions? Because I don't understand these questions also. So naturally, there'll be some kind of challenge for new aspirants. Okay. Now, let me take you to this macro strategy. The first is decode the syllabus. So syllabus should be thorough, and previous year question papers, prelims as well as mains. So these have to be followed. Prelims 2011 onwards and mains 2013 onwards. So this should be always ready with you when you're preparing for the examination. ये हमेशा ready होना चाहिए. Then the basics. How do you develop the basic current affair and newspaper? Broadly, UPSC के जो macro level पर you can see two areas. One is static areas and the dynamic areas. I'm talking about general studies, GS. So static area you will navigate it from the NCRTs, which cover a majority part of static area, and of course the basic standard books. As for the dynamic areas are concerned, you have to do it through current affair, मतलब newspapers. Newspapers के अलावा और भी source होते हैं, which I would not discuss today, but broadly newspapers. Then again, first stage is NCRT, 3 months. Then the standard books, I say 5 to 6 months, you should be thorough and try to complete most of the syllabus in the UPSC. Optional subject, again, March 2022 should be a cutoff date for mains ready. तो मैंने हमेशा कहा है कि preparation आपका mains ready होना चाहिए. People who are targeting next year by March 2022, which means almost 10 months from today, we should be ready with that. People who are targeting 2 years or 3 years down the line, they can have a relatively easier approach. They can follow next 6 month NCRT and newspaper reading. Now, what do you do next? Prepare a study plan, timetable, cover all the pillars of preparation: reading, answer writing, solving MCQs. Resource list should be minimum. ये बहुत important है. आपका resource minimum होना चाहिए. And you can do value addition. Students क्या करते हैं? They don't cover the basics. वो कुछ भी पढ़ना शुरू कर देते हैं. They take input from somebody, और day 1 से वो लक्ष्मीकांत start कर देते हैं, या day 1 से वो heavy book start कर देते हैं, या standard books start कर देते हैं, without covering the basics. Always seek a professional advice. Everybody is a expert in India. तो ऐसा मत करिए. Always seek a professional advice. People like you and me
me, Manas, these are people who are full time guiding the aspirant. हम लोग full time बच्चों को तैयारी कराते हैं, so we are more equipped to handle such areas. ठीक है. Now then we'll come to the don'ts. कोचिंग नोट्स का डायरेक्ट आप द बुक मत उठा के पढ़िए विदाउट कवरिंग द बेसिक्स. नो गाइड, नो ऐसा सिमिलर गाइड वाइड जो मार्केट में चलता है इसका उसका, उसको मत पढ़िए. इट्स कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम. डोंट रैंडमली सॉल्व एमसीक्यूज. I have seen a lot of website, a lot of coaching institutes, they pump you with a lot of MCQs on daily basis, which has no real meaning for the examination perspective unless until there are genuine effort putting the right MCQs. Newspaper summary बहुत सारा आप लोग कहीं से उठा लेते हो without reading newspapers. That should also be avoided. After certain threshold you can follow the summary, but for beginners it is not advisable. Okay. Then now I'll come to I'll take the strategy wise. I'll bring Manas into picture, and Manas, over to you, where I'll just ask you questions. So if I have to ask Manas, आप मुझे ये बताइए, and you can keep it bilingual because most of the aspirants are many of them do not mostly they are adept with English, but some people might face some problem. So Manas, if you have to tell few things about the strategy, तो आप क्या बोलोगे कि एक एस्पिरेंट्स को एट द बेसिक लेवल व्हाट स्ट्रेटजी दे शुड फॉलो? आई जस्ट वांट टू आस्क. Just hold on. I think you can unmute yourself, Manas. Yes. Thank you, Pramod sir, and very good evening to all of you. So on this question about general points on strategy, मुझे लगता है कि प्रमोद सर ने जो मोटा मोटी सभी points पे already प्रकाश डाला है. He's already mentioned a lot of points for general preparation. I would just talk about 5 to 6 points, considering that we are young generation, we are full of energy, and sometimes our mind is not able to take right decision. So considering that, I would first of all start कि एक word होता है perseverance. उस पे आप लोग को ध्यान देना चाहिए. This journey is not very easy. It may take time. It can be a little tough for somebody. It can be easy for others. तो perseverance मतलब होता है कि आप patience रखिए and you keep working hard. But along with that, we have to work a little smart. ठीक है. तो UPSC preparation is not what we study, but also what we don't have to study. तो कई बार जैसे कि सर अभी बता रहे थे कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, बहुत तरह के क्वेश्चंस पंप कर देते हैं. इसी तरह काफी कुछ मटेरियल भी सर्कुलेट होता रहता है. तो आपको बहुत ही सेलेक्टिव होना चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि प्रमोद सर ने टॉक्ड अबाउट being thorough with the syllabus. Now on this point I would just like to add one thing कि आप ये बहुत छोटी सी बात है बट बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सिलेबस का एक प्रिंट आउट निकाल लीजिए और उसको जहाँ भी आप पढ़ते हैं वहाँ पे आप लगा लीजिए. और एक make it a habit to see the syllabus every day you wake up or when you're going to sleep. Memorizing the syllabus and understanding the syllabus is very important. इससे बेटर प्रैक्टिस ये होती है कि आप सिलेबस अपने हाथ से लिखें और उसको दीवार पे चिपकाएं, एक चार्ट पेपर पे लिखें या मिनी साइज शीट्स पे लिखें एंड स्टिक इट देयर. यू शुड नो दैट व्हाट आर द वर्ड्स व्हिच आर मेंशन्ड इन द सिलेबस, कैसे एक जीएस पेपर दूसरे जीएस पेपर से कनेक्टेड है, क्या क्या ऐसे कॉमन टॉपिक्स हैं, क्या टॉपिक्स सिमिलर हैं, क्या टॉपिक्स डिफरेंट हैं. ये सब के बारे में एक बेसिक नॉलेज इनिशियली आपको होनी चाहिए. यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ दैट. दिस इज नॉट एन एग्जाम कि एक किताब उठाई और पढ़ना शुरू कर दिया. यू हैव टू फॉर्म अ स्ट्रैटेजी. दूसरी चीज जो सर ने ऑलरेडी मेंशन की है कि सोर्सेज बहुत लिमिटेड होना चाहिए. यूपीएससी सर्कल में एक बहुत फेमस कोट चलता है दैट यू हैव टू limit your resources in the sense that you should know something about everything and everything about something. यानी कि आपको डाइवर्स सोर्सेज नहीं अपनाने हैं. आपको एक सोर्स लेना है किसी भी टॉपिक का, उसको मल्टीपल रिवीजन करना है instead of taking multiple sources and revising only once. So that should be the idea of our preparation.
and it has already been mentioned that you have to practice questions both for prelims and mains. It is about practicing questions from a standard, mock test, and obviously previous year questions will give you a path of preparation. And I would also like to say that the approach, of course, we are going to discuss it later, but कोई भी प्रीलिम्स हो या मेंस हो, इसमें तीन तरह के क्वेश्चन होते हैं. इजी क्वेश्चन होते हैं, मीडियोकर क्वेश्चन होते हैं, और टफ क्वेश्चन होते हैं. हम कई बार जब प्रिपेयर करते हैं, हम टफ क्वेश्चन देख के नर्वस हो जाते हैं और हमें लगता है कि ये यूपीएससी हमारे लिए नहीं बना है, which is not the right approach. People who are selected in civil services, they eye on easy and mediocre questions. वो क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए जो सबका सही हो रहा है. जो क्वेश्चन सबका गलत हो रहा है वो आप सही कर ले रहे हैं तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट वहां ना चूके जो सबका सही हो रहा है वो आपका सही होना चाहिए. इसीलिए आगे हम स्ट्रैटेजी में बेसिक जो रीडिंग मटेरियल है और एनसीईआरटी की उपयोगिता क्या है, वी विल टॉक अबाउट दैट. सो आवर focus should be to look at the easy and mediocre questions and see that they are not wrong, especially from the prelims point of view. Finally, I see a lot of students depending on technology, and I think Pramod sir will agree to it because we have seen students जो कि online मतलब material जो है वो वन नोट या इस तरह के टेक्नोलॉजी को यूज करके, एप्स को यूज करके नोट्स बनाते हैं. बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो यूट्यूब वीडियोस पे ही डिपेंड रहते हैं, वो काफी वीडियोस पे ही डिपेंड करते हैं फॉर स्टडी. बट आई थिंक फॉर यूपीएससी इट इज नॉट अ राइट वे. आपको कुछ बुक्स तो पढ़नी ही पढ़नी है. दूसरी चीज, इट इज अ रिटन टेस्ट, इट इज अ पेन एंड पेपर टेस्ट. जैसे जैसे आप आगे प्रिपरेशन शुरू करेंगे, आप हो सकता है बहुत इंटेलिजेंट हो, आपको बहुत नॉलेज हो, बट व्हाट एज टीचर्स वी सी इन स्टूडेंट्स दैट दे आर नॉट एबल टू राइट आंसर्स. The reason behind it is that you've been in a habit to write on a laptop or type it on your mobile and you find it quite easy. But this exam demands that you take a pen and a paper and make your notes. तभी आपको पता चलेगा कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, बॉडी कैसे लिखते हैं, कंक्लूजन कैसे लिखते हैं. आप अपनी स्पीड समझ पाएंगे. यू कैन अंडरस्टैंड दैट आप कितनी वर्ड लिमिट में कोई आंसर लिख पाते हैं. All right, so try to develop the habit of a pen and paper. I know it's a very archaic or a very ancient way of studying, but this exam still demands that. And finally, I would like to say that I know it's on a very lighter note, but since this preparation of examination is it's a little lengthier और थोड़ा toxic हो सकता है कहीं कहीं, तो आप एक हॉबी अपनी मेंटेन रखें. और जब भी आपको ऐसा लगे that you want to leave the study and take a break, go to that hobby. That is very important. All right, so these are the certain points which I wanted to discuss, but Pramod sir have covered almost most of the points already. Okay, so thank you, Manas. Thanks for the extra inputs. In fact, what you mentioned is just an added point. आप सब इन बातों पे ध्यान रखिए and remember, note these points. I'm sure जो लोग भी हैं, you must be having the pen and paper with you people. So you just make these notes. बहुत सारी बातें हम लोग PPT पे लिख नहीं सकते हैं because a lot of things are very impromptu and we tend to it is not possible to write everything on the PPT, and that is the purpose of the session, that आप यहाँ आइए और बात को सुनिए. So again, start with the basic books, NCRT. Don't follow standard books directly. Especially those people who do not have a background. If you are from an engineering background, you can't understand history from day one or geography from day one. You can't understand polity from day one unless until you have maybe interest or something. So मुश्किल होता है. Don't make those mistakes. And I'm telling you, I made those mistakes when I prepared during my time. I'm an engineer. I was working in IT company. तो मैं एक इंजीनियर की तरह IT कंपनी में काम कर रहा, तो मैंने बहुत फेस किया. स्टार्टिंग के 4-5 महीने बहुत दिक्कत हुई मुझे. And then I went to NCRT and I wasted my time. तो वो जो 5 महीने का टाइम था जो मैं एनसीईआरटी स्टार्ट करता, तो आई कुड हैव रिड्यूस्ड माय ड्यूरेशन ऑफ प्रिपरेशन. सो दैट इज टाइम बिकम्स वेरी क्रूशियल many a times. Then same subjects from multiple sources. I have seen students किताब बहुत खरीदते हैं, they fill the books, हम भी करते थे, but I would say keep your resource list minimum and just have one book. I'm not saying that one book will have everything perfectly, but you will find one good book
which essentially covers most of the things. ऐसी किताबें मार्केट में हैं जो एक सब्जेक्ट टॉपिक काफी हद तक अच्छे से कवर करती हैं, and you can find and filter those topics which are not good, and those can be complemented from other source. आप कोई ऐसा एरिया है जो वहां अच्छे से कवर नहीं, आप उसको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो. And always don't seek a random advice. Unfortunately, as I mentioned, in India we have so many experts across. So you tend to give advice. आपको advice, आपको ये advice दे रहा है, आपको वो advice दे रहा है, ये सब से बचना चाहिए. That is what I would say. Then coming to the importance of NCRT. Now, what is the role of NCRT in preparation? NCRT is a base building, and I am repeating it again. Students, don't make this mistake. आप लोग एक common गलती करते हो, आप NCRT से start नहीं करते हो. Start with NCRT. It will take 2-3 months time. आपका 2-3 महीना जाएगा उसमें, but believe me, it is worth the effort. In fact, what I have found through my own research and because मैं एक teacher है, mentor नहीं, हम लोग aspirant भी हैं, हम लोग daily पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं. So what I have found that almost 50 to 60% your static portion, 60-70% आपका जो static portion है वो पूरा NCRT से cover हो जाता है. In fact, areas like geography, history, as well as I would say economics. अगर हम 12th की economics को भी पढ़ लेते हैं, macroeconomics को भी पढ़ लेते हैं, so you would see that these areas are covered, thoroughly in the NCRTs. And you अगर आप नए sources पे जाते भी हो, the list can be minimized. So importance of NCRT, again, they are very authentic source. Language is very easy to understand and comprehend. At the same time, you can cover static areas very thoroughly. You can make a good transition. आप अच्छे से subject को start कर सकते हो, especially for students who are from science and commerce background who face problem. And UPSC NCRT से भी routinely question पूछे जाते हैं. That means naturally they will not ask direct questions, but all the time you see that UPSC से भी naturally questions पूछे जाते हैं, and that is something we need to understand. Now coming to the resource list, मैंने minimum resource list एक put की है. Broadly 4 subjects or 5 subjects: economy, polity, history, geography, and environment. Other areas like science and tech, मैं advise करूँगा follow zero NCRT approach. आप एक भी NCRT मत पढ़िए. अगर आपको पढ़ना है, I can give you the list of books, but don't read it now. Economy, polity, history, geography, environment. These are only 5 subjects जिसके NCRT आपको beginning में पढ़नी है. Later on, Indian society या फिर वो सब कुछ chapters selectively आप पढ़ सकते हो. But these books have to be read thoroughly and completely and entirely. So Indian polity, these 4 books are there: 9th, 10th, 11th, 12th. Economy, these 4 books: 9th, 10th, 11th, 12th. Similarly for geography, 11th, 12th, very important. And history, again these history के bull list थोड़ा लंबा है. All the new NCRT should be covered. सारी NCRTs new करेंगे except in history where we have 3 old NCRTs as well. Now I will ask Manas to come here and maybe discuss especially NCRT for history, उसका role क्या है preparation में. I think Manas is not here for some reason. Okay, just one. He must be facing some issue. Yes, Manas, you can unmute yourself. Yes. So Manas, there is a very common query which I come across from aspirants, और वो एक common query ये है that how history is helpful in NCRT, because students want to go with standard books, but I would say what is the importance of NCRT, and these are lists that I've already put. You can just discuss them as well. Thank you, sir, for this question, because I would like to begin that history is very vast, as you all know, and there is this basic problem with students who do not understand from which source we should study. And abhi to pata hai ki there is an old NCRT, there are new NCRTs. Now, let me tell you one thing, that we have to first target at bare minimum things that we should know. हिस्ट्री एक्चुअली इतनी वास्ट है कि जो टॉपिक्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो कहीं से भी पूछे जा सकते हैं. समटाइम्स वी डू नॉट नो द सोर्सेज जहां से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. तो हमारा उस समय क्या टारगेट होना चाहिए? हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमें बेयर मिनिमम सबसे जो बेसिक चीजें हैं वो तो कम से कम हमारी तैयार हो. वहां पे आपकी जो हेल्प है वो करता है your old NCRT. Now there is a difference between old NCRT and new NCRT. The difference is
that old NCERT is your period wise, यानी कि अगर मैं ये कहूँ, अगर एकदम लेमन भाषा में बताऊं तो जैसे इंडस सिविलाइजेशन है, फिर वैदिक एज आएगा, फिर महाजनपद, मौर्य, तो ये एक क्रोनोलॉजी वाइज है। तो फॉर इनिशियली फॉर अ बिगिनर इस तरह से पढ़ना बहुत ही काफी यूजफुल होता है। न्यू एनसीईआरटी थीम वाइज है, यानी कि वो आपको वॉर्स डिस्कस करेंगे, पेंटिंग्स डिस्कस करेंगे, आर्ट डिस्कस करेंगे, ये थीम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये अक्रॉस द हिस्ट्री डिस्कस करते हैं। यानी एक चैप्टर में आपको वैदिक काल भी मिल जाएगा, एक उसी में इंडस भी मिल जाएगा, उसमें सब कुछ मिल जाएगा। बट इन ओल्ड एनसीईआरटी वो एक टॉपिक वाइज चलता है, पीरियड वाइज चलता है, तो पढ़ने में एक फ्लो आपको मेंटेन रहता है। इसलिए I would suggest old NCERT. Also, it's more factual. There are more facts in it. तो prelims के लिए बहुत अच्छा हो जाता है. Written in a very nice manner. तो आपको mains का writing skills भी develop होता है. So you should pick up old NCERT. और मैं old NCERT में भी जैसे यहाँ mention किया है सर ने, RS शर्मा, सतीश चंद्रा और बिपिन चंद्रा, ये बेसिकली क्लास 11th और 12th की बुक्स हैं। तो आपको 6, 7, 8, 9, 10th पढ़ने की आवश्यकता नहीं है हिस्ट्री में, क्योंकि वही चीज 11th एंड 12th में थोड़ा इलेबोरेट होके रिपीट हो जाती है। तो आपको और हम ग्रेजुएट हैं, मिनिमम ग्रेजुएट लेवल के हैं, या कम से कम 12th तो पास हैं, तो वी डू नॉट नीड टू स्टडी दो स्मॉलर फैक्ट्स व्हिच इज देयर फ्रॉम 6 to 10. Pick up 11th and 12th class old NCERT and you can do it. So number one, that the questions directly come from the old NCERT. It is more reliable source. All right. And so that is all. That is why I would suggest that you go for your old NCERT in history, or then if time permits, then you can take up new NCERT. But if there is no time, it's fine. Old NCERT will do. That's it. Okay, so thank you, Manas. So as per Manas, as you can see that if you want to, अगर आप NCERT से भी stick करते हैं, you can cover most of the part of the syllabus. Post that, if you have time, there are some books which can be referred later on, जो मैं अभी detailed list में हम लोग discuss करेंगे. So these are the NCERT list. Each one of you should follow very thoroughly and properly. Now coming to the micro strategy, how do you start? If you are starting today, मुझे आपको लगता है आप कल से 1 June से आप start कर रहे हो. So identify the list of important NCERTs and start from there. Okay, that is the micro strategy. Old NCERT, कुछ students का question है that old NCERT कौन सी? Old NCERT, you will go to the market, you will find the new NCERTs are as per the new curriculum framework. Old ones जो उससे पहले चलती थी. Okay, you know, it is available there in the market. So identify the list of important NCERT, and of course newspaper have to be navigated. Newspaper reading पे आपको focus करना होगा. You have to understand the importance of newspaper. You have to what to read, where to read, what not to read, what, why, how of newspaper has to be decoded. इसके लिए मैंने already last time एक session लिया था last week, which the video is there on the YouTube IAS Edge channel. You can go through that. As I mentioned, the notes making process is very important. If you are studying, the parallel notes should be there. Even for technology savvy people, already Manas discussed about Evernotes, OneNote, जो मैंने पिछले session में discuss किया था. So notes making process का आपको habit डालना चाहिए. If you think that is very individual, अगर आप सबका नोट भी बना सकते हो, तो आप selectively कुछ area का नोट बनाओ, where you feel that you will be able to do justice. In areas where you feel more comfortable, आप book से read करना चाहते हो, you can go ahead. But short, summarized, crisp notes are always helpful for last day revision, because end में जो revise करते हो, आपको वही याद रहता है, वही exam में आप लिख पाते हो. Again, another thing is backward linkage approach. Now, what is backward linkage approach? And that is something which I have innovated from my side. So let's say आपने एक newspaper open किया, and in that newspaper आपने you come across एक technical word आ जाता है. मैं economics पढ़ाता हूँ, तो let's say a word comes in, fiscal prudence. मान लो ये word आ गया. अब ये word fiscal क्या है? Prudence तो मान लीजिए आपने ठीक है समझ लिया आपने dictionary देख के, but what is fiscal? Now this is you will not find this word in general. कहीं और आपको नहीं मिलेगा. Economics में मिलेगा. तो fiscal means related to finances. ठीक है? And एक fiscal जो है वो गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से होता है, तो इट रिलेट्स टू द फाइनेंसेस. फिस्कल ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर, फिस्कल पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पॉलिसी रिलेटेड टू फाइनेंसेस एट मैक्रो लेवल. तो अब ये वर्ड आया एंड यू डोंट नो इट्स मीनिंग, व्हाट डू यू डू? जस्ट गो एंड गूगल इट, और यू हैव अ डिक्शनरी. एक और चीज एडवाइस करता हूं, यू कैन ऑलवेज हैव डिक्शनरी विद यू, अ बेसिक डिक्शनरी व्हिच कैन हेल्प यू, एंड जस्ट रीड द वर्ड. आप उस वर्ड का बेसिक मीनिंग चेक करो, एंड जस्ट maybe write wherever, आप उसको नोट डाउन कर सकते हो, because this is going to come again.
there are around 200 maybe 250 or 300 keywords will repeat in your preparation. ऐसे पूरे सब्जेक्ट में सारे सब्जेक्ट को मिला के 200-250 कीवर्ड्स होंगे, दे विल रिपीट अगेन एंड अगेन. सो आई हैव टू बी फेमिलियर विद दोस कीवर्ड्स. अगर मेरी फेमिलियरिटी उन कीवर्ड्स से होगी, मेरा प्रिपरेशन आसान होगा. एंड इन द बिगिनिंग स्टूडेंट्स विल फेस प्रॉब्लम, सो जस्ट लुक फॉर दैट बेसिक कीवर्ड और उस मीनिंग जो भी होगा सब्जेक्ट का, और वो वर्ड आपको एक बार मीनिंग समझ में आ गया, डोंट डू द रिसर्च एंड हैवी R&D हियर. बस बेसिक मीनिंग नोट डाउन करिए, एंड वंस दैट मीनिंग कम्स अगेन, आपको पूरा आर्टिकल न्यूज़पेपर का समझ में आ जाएगा, बिकॉज मे बी दैट वर्ड इज द ओनली हर्डल. फिर है वीकली टाइम टेबल बनाइए. कई स्टूडेंट्स को देख रहा है वो डेली टाइम टेबल बनाते हैं. नहीं, ऑलवेज हैव अ वीकली टाइम टेबल, बिकॉज एवरी डे इज नॉट सेम. किसी दिन आप अच्छे से पढ़ोगे, किसी दिन अच्छे से नहीं पढ़ोगे. ठीक है, तो आप एक दिन कम पढ़ सकते हो तो अगले दिन आप मेकअप कर सकते हो. ऑलवेज हैव अ वीकली टारगेट, बिकॉज मेकिंग अ टारगेट एवरी डे विल बी अ वेरी बोरिंग प्रोसेस. सो सिट वन डे, प्लान फॉर द होल वीक, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन मूव फॉरवर्ड. दूसरा क्या है, यूपीएससी एक जर्नलिस्ट एग्जामिनेशन है. डोंट गो इन द टेक्निकल डिटेल्स. आप पीएचडी करने की आपको जरूरत नहीं है, बहुत थरो होना की जरूरत नहीं है. आप, मैंने स्टूडेंट्स को देखा है एक टॉपिक वो 3-3 बुक से पढ़ते हैं, एंड देन सडनली उनको कुछ भी पता नहीं होता है. सो पिक वन बुक, रीड इट फ्रॉम देयर वेरी थरली, देन डेवलप सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी. बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी डेवलप करिए. वंस प्रिपरेशन आपका जब नेविगेट करेगा, जब अच्छे से आगे मूव करेगा. ऑप्शनल इक्वली इंपॉर्टेंट, इसको हल्के मत लीजिएगा. आई वुड से ऑप्शनल शुड बी डिसाइडेड बाय जुलाई एट द मैक्स. अगस्त सितंबर में आपकी प्रिपरेशन शुरू हो जाने चाहिए, एंड यू शुड बी थरो विद ऑप्शनल बाय मार्च 2022 तक आपका ऑप्शनल एटलीस्ट 80% to 90% रेडी होना चाहिए, if not 100%, because that will help you to crack the examination next year. Planning and strategy is equally important, and planning and NCRT is equally important, because planning and strategy making will decide the outcome of the examination. आप प्लानिंग करिए, स्ट्रैटेजी बनाइए, उस पे वर्क करिए. स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करिए तो री-स्ट्रैटेजाइज करिए, री-प्लान करिए, बिकॉज प्रिपरेशन इट्स लाइक अ, you are planning, you are making a strategy, and there is a feedback system. and ये feedback क्या है? Manas, I'm going to hand over to you. Hello. Can you people hear me? So there are other few things which I would like to mention here. Is a lot of people have been asking me about you know, coaching institutes and mentorship and all these things. So it is also a part of your strategy. And one thing which I would really like to mention here is that you don't have to, you know, there is a very much requirement, it's very important to have a personalized mentorship with somebody who can give you personal attention. एंड तो इसलिए कई बार ऐसा होता है कि इन बिग कोचिंग्स, बड़ी कोचिंग्स में यू कांट गेट दैट काइंड ऑफ पर्सनल अटेंशन एंड personal coaching or personal guidance. Therefore, you know, the thing which I faced as a problem was
Sorry, everybody. There was some internet fluctuation is going on from my end. Am I audible to everybody? My voice is coming. Okay, so now I will hand over to Manas. Okay, Manas is going to discuss. This. Okay, so am I audible, everybody? My voice is coming to everybody. Sabko aa rahi hai meri awaaz? Okay. So Manas is going to discuss about the history part. Manas, this is the PPT is visible. Okay. Yes, sir. Yes, sir. I was just before starting to tell about history, there's one point which just clicked in my mind, and I was trying to share it with the students here. Is that you know, in this journey of preparation, we require very good mentorship. Okay, that I want to stress is that many students, और आप लोग को भी ये कमी लगेगी when you join big coachings or centers, जब जैसे से टाइम आगे बढ़ता जाता है आपको लगता है you need one teacher or a group of teachers who can have a personalized touch to your preparation, जहाँ पे आप अपनी especially for mains preparation जहाँ पे आप कॉपी दिखा सकें, आंसर improve करवा सकें. So always approach, instead of bigger classes and bigger teachers and bigger coaching institutes, try to get in touch with institutes or teachers who can give you personal guidance. And believe me, that is one thing which helps students qualify this examination, especially if you want to qualify with good ranks. Now, that was the point which I missed, and I wanted to stress because that is what me and my friends we felt in a way lacking in our preparation. So that is what I wanted to stress here. But let's come to history, and quickly I will just say that the material has been written here, and exactly that is what you have to follow. Basically, focus on NCRT for art and culture. But apart from that, there is this book by the CCRT, which is written in the third line, Center for Culture Research and Training. Now, these are the material from which books are written. जो books आपको market में मिलेगी और बहुत popular name से बिकेगी, ये basic material रहता है उन books में भी. So why not study this? Because art and culture वैसे भी बहुत diverse हो जाता है, question बहुत tricky हो सकते हैं. इसलिए मेरा ये focus रहेगा आपके लिए कि you focus on things which are basic in nature and building material हो आपके understanding के लिए. And nothing better than NCRT and this book on CCRT which is mentioned here, जो आपको वेबसाइट CCRT की वेबसाइट भी है, वहां पे भी मिल जाएगा. ओके, और कैन वी हैव अनदर स्लाइड सर? Then when you come to the modern Indian history, again, as we've already suggested that NCRT Modern India is more than enough. But apart from that, there is this book by Spectrum Publication, especially for those students जिनको हिस्ट्री के बारे में बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उनके लिए स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की ये जो बुक है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, एक बेसिकली एक गाइड है जिसमें आप जिनको मेमोराइज करना है और रटिफिकेशन पे बिलीव करते हैं उनके लिए बुक ठीक है. So you can, it is among all the guides, this is one guide which has been useful for students. So you can take up Spectrum, but after you have studied NCRT by Bipin Chandra or this book India's Struggle for Independence by Bipin Chandra. Post independence के लिए the book has already been mentioned, India since Independence by Bipin Chandra, selective chapters. और वो जो चैप्टर्स हैं वो ऑब्वियसली जब आप किसी इंस्टीट्यूट में जाएंगे या कोई टीचर होगा वो आपको मार्क कर देता है कि these are the specific chapters which you have to deal with. You don't have to go in the details of this portion. इतना काफी रहता है. But again, Bipin Chandra NCRT is the bare minimum which you need. So next slide. Okay. And finally, when we come to the world history, I'm saying finally because till here I can speak, is that again there is a NCRT book by Arjun Dev.
और ये भी पार्ट 2 इसका पढ़ना है, स्टडी ऑफ सिविलाइजेशन पार्ट 2 बाय अर्जुन देव। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री से कभी कभी 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन ये एक स्टैटिक पोर्शन ऑफ सिलेबस है, इसलिए इसमें तो कोई गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इसलिए ये बुक एनसीईआरटी की बुक जो यहाँ मेंशन्ड है। दूसरी, अगर आप चाहें तो आप वर्ल्ड हिस्ट्री बाय नॉर्मन लो पढ़ सकते हैं, बट द प्रॉब्लम विद दिस बुक इज कि इंग्लिश थोड़ी टफ हो सकती है। इसलिए अगर आप नॉर्मन लॉ नहीं लेना चाहते तो एक देयर इज अनदर बुक बाय एन इंडियन राइटर known as Ranjan Chakravarti ki A History of Modern World. This is that book. It's thin, covers almost all the topic and written in a very lucid English. तो अगर आप नॉर्मन लॉ नहीं पढ़ना चाहते हैं then you can take up this book by Ranjan Chakravarti which is an Indian author. और एनसीईआरटी तो पढ़नी है इसके लिए भी. So that is what I can talk about history. Sir will tell about geography. Okay, so as far as geography is concerned, geography is again a very basic approach. NCRTs will be very important, and NCRT plus there are some books which can be referred later on. There's one book called GC Leong. Also, map work has to be done, apart from this. Okay, so all these areas are there. I'll take questions in the end. Guys, please wait till let me complete it. So NCRTs would be for geography. Now there are 4 NCRTs here, GC Leong, and plus you have to do a lot of atlas map work. Then this will suffice most of the areas of geography. And post that, agar uske baad karna hai, there are some standard books which again are beyond. I would say that those people with optional unke liye rehti hain. But there are books like Majid Hussain, a lot of coaching institute batate hain, but it's a waste of time. I would say stick to this basic approach unless until you have a geography as an optional. This will work. You will be able to solve 70-75% of the questions anyway, by solving them and following current affair and map work regularly. Coming to Indian society, standard sociology, 11th and 12th की किताब है, Indian society, social institutions. Selectively you have to read few chapters, 3-4-5 chapters पढ़ने होते हैं, and a lot of stuff will come from current affair, and you have to do some R&D from internet. There are books also for sociology, for society, but I would say that stick to the basic approach. And हम लोग जब पढ़ाते हैं तो हम लोग जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, इंडियन सोसाइटी हो गया, हम तो ये बच्चों को ये कहते हैं कि आप notes, books भी मत पढ़ो, just follow the notes because and current affair, that will be sufficient. Okay. Then coming to the polity and governance, social justice. Now again it has 2 areas, the static area and the dynamic. For static portion, Lakshmikant is very important. Lakshmikant is thorough. Indian polity class notes, जो हमारे इनमें class notes मैंने इसलिए put किया because students of IAS Edge, for them the class notes will be the primary along with the NCR Lakshmikant. Second ARC में कुछ पढ़ना होता है, but so you have to selectively हम बताते हैं, which again मत पढ़िए इसको, आप लक्ष्मीकांत को स्टिक कर सकते हैं, and that will cover most of the static areas. As far as the dynamic area is concerned, this is a very area which would require a lot of effort. So dynamic areas के लिए हमको cover करना पड़ेगा. There is a very good website called PRS. You have to do a lot of current affair reading, Supreme Court judgment, High Court judgments, because issue based questions आते हैं mainly in the mains. In prelims you rarely get questions. Mostly prelims में जो topics news में रहते हैं वो उनको आप focus कर सकते हैं from prelims point of view. But for mains you will get most of the stuff that you will get from here itself, current affairs and PRS. The Hindu, very important because regularly जो articles आते हैं editorials में या फिर उससे काफी help मिलती है. If you have time and bandwidth later on, कुछ अच्छे channels हैं, Big Picture हो गया, India's World हो गया, Paper 2 के लिए, तो ये सब topics के selectively आप इनको videos देख सकते हैं, but I would advise stick to the basic approach, और governance के लिए हम current affair पे ज़्यादा rely करेंगे. Coming to IR, students always ask me which basic book. There are many good books by VP Dutt, there is a book by Mr. Malone, there is a book by Shashi Tharoor. कोई भी बेसिक इंडियन फॉरेन पॉलिसी किताब मैंने वीपी दत्त का मेंशन किया है बिकॉज इट इज वाइडली बीइंग फॉलोड बाय स्टूडेंट्स, बट दैट इज ओनली फॉर बेसिक्स. जो आईआरए क्वेश्चंस होंगे मेनली 3-4 क्वेश्चंस आपके आईआर में आते हैं, बहुत नहीं आते हैं. लॉट ऑफ स्टूडेंट्स बहुत पढ़ते हैं, मैंने देखा आईआर में वो पीएचडी कर लेते हैं, and because IR में you get a lot of articles from the Hindu almost on daily, every second day you get an article, and people do PhD. IR से क्वेश्चन कितना आ रहा है? 2-3 क्वेश्चन आ रहा है. प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं मे बी अगेन वो फॉरेन पॉलिसी पे तो आते नहीं हैं. So they might come from international organization, they might come from maybe many reports are in news, वहां से आ जाते हैं.
तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए कुछ सिलेक्टिवली आप इन चैप्टर्स पढ़ लीजिए, जस्ट टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ इंडिया, बायलैटरल रिलेशंस, इंपॉर्टेंट कंट्रीज, एंड देन डू फॉलो द हिंदू वेरी थरली। स्टूडेंट्स ऑफ IAS Edge या फिर जो कहीं आप जहां भी कोचिंग पढ़ते हो, इंडियाज वर्ल्ड एक अच्छा चैनल है, बट अगेन एज आई मेंशन सिलेक्टिवली पढ़ना है, एंड always remember IR has to be seen in perspective in relation to India. How does it impact India? Because IR is a very wide area. ठीक है, इस पे लोग PhD करते हैं, so we have to avoid that kind of this thing. Economy, again I would say start with the NCRTs. I'm assuming that NCRT is a basic thing. NCRT के बाद ही आप बाकी पे जाते हो. NCRT is definitely there. Apart from NCRT, Indian economy की किताब है NCRT के बाद, मिश्रा एंड पुरी. This is a very good book. But only problem is एक बहुत ही it's like a compendium, बहुत मोटी किताब है, but it is a good book. जिनको नहीं पढ़ना है, selectively पढ़ना है, they can go with संजीव वर्मा. मिश्रा एंड पुरी is my side advisable book. एक बहुत famous book है मार्केट में by रमेश सिंह. उस किताब को बिल्कुल मत पढ़िएगा. आपके कंसेप्ट अगर बने हुए हैं तो खराब हो जाएंगे, because that book has not been covered properly. The depth is lacking and there are some mistakes also, which I always suggest student not to follow that. वो काफी पॉपुलर किताब है, बट इट इज नॉट अ राइट बुक फॉर बिगिनर्स. कमिंग टू द अदर एस्पेक्ट, फिर बजट, इकोनॉमिक सर्वे विल बी द मेन एरिया. बाकी हम लोग करंट अफेयर पढ़ते रहिए, यू विल गेट मोस्ट ऑफ इट. इंटरनल सिक्योरिटी, करंट अफेयर, एक दिस किताब है एम कार्तिक की, बहुत बेसिक किताब है, बहुत अच्छी तो नहीं है लेकिन ठीक है. इट्सा की रिपोर्ट्स बहुत हेल्पफुल रहती हैं, स्पेशली इन सम एरियाज, एंड करंट अफेयर नोट्स वुड सफिशिएंट. Disaster management, there is no specific book for here, but you can follow from precise notes on NDMA. वहां से आप उठा सकते हो, स्ट्रक्चर फंक्शंस के बारे में देख सकते हो. करंट अफेयर से काफी कुछ टॉपिक आता है, जैसे अभी साइक्लोन यास आया था, साइक्लोन जो है ताउते आया था, तो ये सब डिजास्टर मैनेजमेंट के भी टॉपिक्स हैं. ओके, एनवायरमेंट इकोलॉजी, स्टिक टू NIS एज आई मेंशन, क्लास नोट्स, एंड करंट अफेयर डायनेमिक होता है. साइंस एंड टेक द हिंदू. यूट्यूब पे आपके जो नए टॉपिक्स न्यूज में रहते हैं उसमें थोड़ा सा आप R&D कर सकते हो, एंड ऑफ कोर्स क्लास नोट्स आई वुड से. नाउ ओवर टू द मानस, आप एथिक्स का देख लीजिए. एक सेकंड. Yeah, so this is a new paper which was added by UPSC. और जब ये पेपर ऐड हुआ था तो काफी टर्मोइल हुआ था, both in coaching centers and among the students preparing for civil services. Obviously detailed strategy ethics से कैसे करना है वो when you join the classes it will be told to you. लेकिन जो बेसिक बुक्स हैं यहाँ पे, एक बहुत बेसिक बुक है, वो है लेक्सिकन बाय क्रॉनिकल पब्लिकेशन. दैट इज अ बुक व्हिच यू कैन स्टार्ट विद. अदर देन दैट देयर इज अ वेरी फेमस राइटर ऑफ एथिक्स नोन एज जी सुब्बा राव, और उन्होंने एक बुक दी है, बट अगेन दिस बुक इज अ लिटिल बल्की, सो इफ यू डू नॉट वांट टू रीड दिस बुक इट्स ओके, बट अगर आपको थोड़ा सा एडवांस मटेरियल चाहिए देन यू कैन लुक एट दिस बुक. When you will see the past year ethics questions, you will see that there is one section which talks about case studies. Case studies is basically कि कुछ एक आपको सिचुएशन दे देंगे और पूछेंगे उसमें क्या करना चाहिए. इसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड न्यूज़पेपर्स भी बहुत हेल्पफुल रहते हैं, एंड ऑफ कोर्स इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए. दिस इज अ पेपर वेयर रिक्वायर्स ट्रेमेंडस योर राइटिंग skills and writing practice. इसलिए आई वुड सजेस्ट दैट यू शुड नॉट स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद एथिक्स. थोड़ा कुछ मेंस का हैबिट हो जाए एंड देन यू शुड कम टू दिस. Then there is a second ARC report which is a little old. People do without it also, but इसमें कुछ चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ना चाहिए. इन समरी अवेलेबल रहती है, मार्केट में भी अवेलेबल रहती है, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे एथिक्स इन गवर्नेंस, प्रमोटिंग ई गवर्नेंस, RTI. So all these things will be there. If there's one portion which talks about moral thinkers, उसके लिए internet sources and again coaching material will suffice. So I know मतलब as sir you know that ethics is a very big paper and it requires complete different session for it, and it is a very new paper for even those who are from social sciences background. इसलिए for now I can only discuss your books, but slowly and slowly जब आप मेंस की हैबिट में आ जाएंगे तो ये पेपर काफी इंटरेस्टिंग पेपर भी होता है. एथिक्स हम लोग यूजुअली जो है फॉलो करते हैं आफ्टर मे बी 6-7 months of preparation, because ethics require certain basic understanding of polity and governance, institutions. At the same time you need to be in the groove of preparation. आप ऐसे normally ethics पढ़ेंगे तो वो बात नहीं आएगी, because you have to read ethics, study ethics along with answer writing, as Manas mentioned. So that completes the book list. Coming to the timetable, a very basic approach. I've already discussed this part in detail in the last week's session. Start with the basic timetable.
basically the idea behind a good timetable is that you should understand the pace of your preparation. आपका preparation का pace आपको समझ में आना चाहिए. Newspaper reading एक आपकी preparation का एक ingredient होना चाहिए, very important. Always start with small and realistic target. Don't make an ambitious target कि मुझे 15 घंटे पढ़ना है और 20 घंटे पढ़ना है. ऐसा unrealistic होता है काफी. Aspirants जो होते हैं, जो real aspirants होते हैं, who crack every year, if you ask them, they follow a very basic approach, 6-7 hours on daily basis. So आपका approach वहाँ होना चाहिए कि मेरा ये effectively जो है, am I able to give 6-7 hours on a regular basis or not? Because if you do that regularly, that will suffice. Agar somebody is telling you 15 hours I'm studying, 10 hours I'm studying, now that is humanly impossible for a regular level, like a regular period of 15 months or 18 months. So students who are really a genuine aspirant, they are able to crack, they are able to study 6-7 hours for 1 year. 10 months, 6-7 hours is more than sufficient. People with job, if you can study 4-5 hours also, again a lot will depend on individual. There is no set formula कि आपको मुझे इतना घंटा पढ़ना है तो मेरा selection हो जाएगा. Because I've seen people studying for 3-4 hours as well, and they have also cracked examination. मैंने बहुत सारे लोग जॉब में लोगों को मैंने क्रैक करते देखा है जिनके पास टाइम नहीं होता था, and they have also learned to handle all these aspects. So there is no fixed rule and formula. Students asking me, sir मुझे कितना घंटा पढ़ना चाहिए? I say what is the level of effectiveness? तो timetable एक बहुत important part हो जाता है preparation का, and start with a small target, make a weekly target, understand that how my weekly schedule is able to help me in my preparation, and then improvise it, improve it, and make it. This is a dynamic process. There is no fixed timetable or study approach which can be there. Later on, you can make macro level पे तो पढ़ाई जब start हो जाती है तो annual एक monthly schedule बनाओ at macro level. Next 3 months में मुझे ये करना है, next 6 months में ये करना है, next 9 months में ये करना है, and be very specific about target, because targets are very important. अगर आप targets को, and believe me, 99% cases में आप targets को achieve नहीं कर पाओगे, because targets are mostly unrealistic. But again, I'll aim for the stars. At least I'll reach the moon. I will try to मैं stars पहुंचूं, moon तक तो पहुंच जाऊं. मेरा objective वो रहेगा, because that is how. There is no perfect preparation. कोई perfect approach नहीं होता है. लोगों को लगता है मेरी तैयारी complete हो जाएगी तब हम मेंस का आंसर लिखेंगे. कभी preparation अभी complete भी नहीं होगी. Selection incompleteness में हो जाता है. ये भी याद रखिएगा. This is what I've seen. So that is what essay and answer writing, very important part of area. I always say 10% rule follow करिए answer writing पे. And always appraise the preparation को appraise करिए कैसे preparation move कर रहा है. जॉब वालों के इसलिए मैंने डिस्कस किया था कि अगर आप जॉब में हैं तो you have to be little realistic with how you can manage with your job. You can see these pointers and you can do's and don'ts, ये सारे हैं, इनको आप देख लीजिएगा pointers को. PPT will be shared. Again, health is very important. Health is wealth. COVID ने ये बात बता दी है. Without health, nothing is possible. So take care of your health. Physical activity, diet equally important. Especially students जो full time तैयारी कर रहे हैं, मैंने देखा है बहुत टाइम बीमार हो जाते हैं, 15-15 दिन डिस्टर्ब हो जाते हैं, because preparation takes, at times it takes a toll on your psychological aspect as well. So physical health सही रहेगा, mental health भी आपको maintain करना है, which comes with physical activity, प्राणायाम, योगा, normal physical, या walk कर सकते हैं 15-20 minutes, anything which is important. Young हो, कोई ऐसा कोई टेंशन नहीं है, डाइट को बेसिक रखो, स्मॉल मील्स को प्रेफर करो, फिजिकल एक्टिविटी थोड़ा बहुत रखो, फॉलो. एंड अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रिपरेशन का, व्हिच आई अगेन एम्फसाइज, व्हिच मानस आल्सो मेंशन्ड, दैट प्रिपरेशन इट इज नॉट अ मैकेनिकल प्रोसेस. डोंट मेक इट मैकेनिकल कि मुझे आई हैव टू स्टडी 7 days a week or I have to study 7 days into 8 hours a week. That is humanly impossible. Always have breaks in between. Maybe, and I always I tell students to follow a system of rewards. Rewards कैसे work करता है? When you meet a target, you can reward yourself, take a break for 2 hours and do something which you like. Maybe watch a movie, enjoy, have good meal, take a break. You can take half day break or full day break. In the beginning, study for 6 days a week, and 7th day break रखिए, सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़िए. Then later on, once preparation takes the momentum, you can take half day break. Sunday को मैं दोपहर तक ही पढ़ूंगा 2 बजे तक, and after that second half I will take break. I'm just saying, but remember that break will be a reward that you are giving. अपने आप को reward break के through कर रहे हैं, and that break, the reward will come in the end. काम करने के बाद reward मिलता है, काम से पहले reward नहीं मिलता. कुछ लोग starting में ही reward लेना शुरू कर देते हैं, break लेना start करते हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए. Reward should be in the end. So that is what I would advise you for the aspirants who genuinely want to do that. And believe me, preparation
अगर आप मेरे से पूछो कि सर वो हमेशा एक हैबिट होती है लोगों की प्रिपरेशन को प्रोक्रेस्टिनेट करने की, कि हम कल करेंगे और अगले महीने करेंगे, अगले साल करेंगे। अगर यूपीएससी दिमाग में आ गया है, whether you are in second year of college or first year of college or whether you are full time, start preparation. Don't make this mistake, because as the early you start preparation, because preparation के बहुत सारे nuances हैं, preparation एक लंबी जर्नी है। फॉर एग्जाम्पल we have an approach for 1 year also, 2 year also and 3 year also. अब आप डिसाइड करो कि आपको 1 साल में करना है तो आपको 7 to 8 आवर का एफर्ट करना है, आपको 2 साल में करना है तो हम 4 to 5 आवर्स में हम रेगुलर 3-4 घंटे रोज पढ़ेंगे। अगर आपको कॉलेज में हो, फर्स्ट ईयर में हो, आई वुड एडवाइज 2.5-3 आवर्स हमें पढ़ना है। सो यू हैव टू मेक योर प्रिपरेशन अप्रोच एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द योर कि आपको अटेम्प्ट कब देना है। So that is what is important, and that completes today's session. Now I will move to question answers. मैं question answers पे move करूँगा, and तो question answers में specific to questions पहले मैं मानस से questions आप लोग को कहूँगा। If you have a question related to history, ethics, social issues and essay, आप उस बारे में